Hello friends, welcome to our channel. We have started our new series on economic and banking for the students who are preparing for UPSC and other competitive examination. So please do like, share and subscribe our channel for more such videos and give wings to your preparation. Now today in this lecture, we are going to discuss about the banking liquidity system. So now without further delay, let's start the session. It covers introduction and impacts on banking system and consumer. Introduction. What is banking system liquidity? Liquidity in the banking system refers to readily available cash that banks use to meet short-term business and financial needs. बैंकिंग प्रणाली में तरलता का तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है जिसकी बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है. On a given day, if the banking system is a net borrower from the RBI under Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, the system liquidity can be said to be in deficit, and if the banking system is a net lender to the RBI, the system liquidity can be said to be in surplus. किसी दिए गए दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई से तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत शुद्ध उधार करता है तो सिस्टम तरलता को घाटे में कहा जा सकता है और यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए शुद्ध ऋणदाता है तो सिस्टम तरलता अधिशेष कहा जा सकता है. How can a tight liquidity condition impact consumer? तंग तरलता की स्थिति उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है? A tighter liquidity condition could lead to a rise in the government securities yield and subsequently lead to a rise in interest rates for consumer too. एक तंग तरलता की स्थिति से सरकार प्रतिभूतियों की उपज में वृद्धि हो सकती है और बाद में उपभोक्ताओं के लिए भी ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है. RBI may increase the repo rate which can lead to a higher cost of funds. RBI रेपो रेट बढ़ा सकता है जिससे धन की लागत बढ़ सकती है. Banks will increase their repo linked lending rates and the marginal cost of funds based lending rate, that is MCLR, to which on loans are linked to. This rise will result in higher interest rates for consumers. बैंक अपने रेपो लिंक्ड उधार दरों और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में वृद्धि करेंगे जिससे सभी ऋण जुड़े हुए हैं. इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उच्च ब्याज दर होगी. The MCLR is the minimum interest rates that bank can lend at. Thank you for watching.